from April 2026. What is the question? See beta. Question is f is from r to r. मतलब एक फंक्शन है जो कि r to r डिफाइंड है. इसका मतलब क्या होता है बेटा? एक फंक्शन ऐसा है जो r to r डिफाइंड है, मतलब r जो है वो इसकी क्या है? डोमेन हो गई है ना. और जो इस साइड लिखा होता है ये इसकी कोडोमेन हो गई. क्लियरिटी है यहां तक? अब मेरे को उसने फंक्शन दिया है कि फंक्शन है 2x² माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई 3x² प्लस x प्लस 3. अब ये 1 है, ऑन 2 है या फिर किस तरीके से है ये अपने को निकालना है. चलिए ये तो है अपना 2x² माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3x² प्लस x प्लस 3. यही है ना बेटा? अब इसको मेरे को चेक करना है कि 1 है या ऑन 2 है या फिर कैसे है. ऑल राइट, अभी के अभी चेक कर लेंगे. अब सबसे पहले अगर मुझे 1 चेक करना है तो सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा. तो जब मैंने dy बाई dx निकाला तो यहाँ पे कौन सा रूल चल जाएगा? u बाई v रूल चल जाएगा ना बेटा. u बाई v रूल से अपन बोल देंगे v स्क्वायर एंड v इंटू u का डिफरेंशिएशन. तो u का डिफरेंशिएशन हो गया 4x माइनस 3 minus u is 2x² minus 3x plus 2 into v का डिफरेंशिएशन that is 6x plus 1. हो गया इतना. अब यहां से अपन इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं. तो अगर अपन सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना बन के आएगा? इसको जरा एक बार कैलकुलेट करके बता दीजिए. ये आ जाएगा आपका 12x³ प्लस 4x² माइनस 3x plus how much? Sir, minus 3x². Okay. First of all, I can for 4x na, so 12x³. So here we will get 12x³ plus 4x² plus 12x minus 9x² minus 3x minus 9 and here 12x³ minus 18x² plus 12x plus 2x² minus 3x plus 2. Alright, now we'll simplify this. So if we simplify then 12x³ will be gone only na. 4x² and 18x², that is 22x², right beta? And here minus 9x² and something is coming from there, and there also minus 2x². This term you can see minus 2x². So total how much? Minus 9 and minus 2, that is minus 11x², right? X, so 12 minus 3, that is 9, and 9x from here, and from here also 9x only. So 9x and 9x both will be gone, cancelled. And then we have minus 9 minus 2, that is minus 11. So it is, if I take the 11 common, it will be 2x². Oh, it is 11x² na. It is 11x² minus 11, that is 11 common x² minus 1, right beta? So dy by dx, you can see dy by dx is 11 of x² minus 1 upon this whole square. But this 11 of x² minus 1, this can be positive and negative both. How? Because x² minus 1, it will be 0 at x equal to 1 and plus minus 1. So between minus 1 and 1, it will be negative. And before minus 1, like minus infinite to minus 1, negative. Positive, between minus infinite to minus 1, positive. Minus 1 to 1, negative. And 1 to infinite, positive. That means dy by dx is somewhere positive, somewhere negative. So it is not 1, 1. Because for 1, 1, it has to be always positive or always negative. So it's a minimum function, right? But it's MO. Yes, sir. Right now? Now we have to find the range, because for onto what we say, codomain must be equal to range. So here we are writing 2x² minus 3x plus 2 whole divided by how much? 3x² plus x plus 3. That is 3x² plus x plus 3.
this is my y. Now we have to find the range. So what is the method? Cross multiplication. So if we do the cross multiplication here, we'll get 2x square minus 3x plus 2. This is equal to 3yx square plus xy plus 3y. After that, we'll take x square common. So if x square common, then 2 minus 3y minus x common. So 3 minus y plus 2 minus 3y, that's equal to 0. Next, discriminant. So discriminant is b square minus 4ac. So 9 plus y square. है ना? Do one thing. 3 minus y, the whole square, minus 4 into 2 minus 3y into 2 minus 3y, b square minus 4ac, right? This has to be greater than or equal to 0. So from here, we can see a square minus b square, right? So a square minus b square, the formula is a plus b. So it is this thing, and a minus b, that is 3 minus y minus 2 times 2 minus 3y. This is greater than equal to 0. Next, what we are going to do, beta? This is 3 and 4. 4 and 3, how much? 7, na? And minus 6 and minus 1. So that is minus 7y. And here we have 3 minus 4. That is minus 1. And minus y plus 6y. How much? Plus 5y. That's greater than equal to 0. Next we will say 5y minus 1. And here also we multiply by minus y, because when we are going to number line, we have to make sure that coefficient of y is positive only. So 5y, and here 7y minus 9 lesser than equal to 0. I will add one thing. When we are going to number line, we have to make sure that the leading coefficient is y square. That coefficient has to be positive. मतलब उसको positive होना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे ये minus 35 y square हो रहा था, अपन ने प्लस में बनाया तो इतना हो गया. उसने बोला लेसर देन इक्वल टू 0. दैट मीन्स अगर ये लेसर देन इक्वल टू 0 है तो फिर बिटवीन द रूट्स आंसर हो जाएगा, यानी कि 1/5 से 7/9. रेंज ये है बेटा, समझ पा रहे हो? कोडोमेन था R, रेंज ये है. कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं है. ये मिनिमम इनटू फंक्शन है बेटा, नाइदर 1 1 नॉर इनटू. दिल्ली